So we are live now. So good evening, everyone. Today on the call with us, we have Mr. Sripal Jain. He's the co-founder and the lead instructor at Simandhar Education. And we wanted to share a success story with you of Mr. Ankur Yadav. Um, he the results that came out yesterday, he cleared both his levels of CMA examination, and he started with us as a Zomato intern, and now he's as a Zomato delivery person, and now he's a intern with working as an intern with Infosys, and so it was great having him here, and now we'll have an interaction between the two of them. Hey, first of all, thank you so much, Archita, and I hope everyone is able to hear us, watch us closely now. So today we have an inspirational story of US CMA, and Ankur Yadav is one of those examples. So being a Zomato delivery boy, right, and doing US CMA, completing both the parts, and getting the internship with Infosys. So as you know, guys, just to give a brief background. So we tied up with Infosys for internships of US CMA. So we are one of the exclusive, we are, I would say, the only institute in India who is doing internships with Infosys. So where we give our students a joint certificate of Infosys and Samandhar, both their names on that, right? So we are one of those institutes today in the country. And Ankur was one of those candidates who got selected for those internships. And I'm so proud to see Ankur passing both the part. And today, when I was talking to him, I was a bit emotional because, to be honest, he have not come from a very strong financial background. And when he registered with Simandhar, he didn't even tell that his financial background is not good. But that is how it is. So once they register, and once we came to know that the financial is not supporting, and that's how we placed him in Infosys for internship. And then success is something everyone is observing today for Ankur, right? Over to you, Ankur. मुझे पता है आप बहुत ही खुश होंगे, तो अंकुर पहले बताइए हाउ वाज द जर्नी, कैसे स्टार्ट हुआ है और कैसे आपने खत्म किया है. सो गाइज, अंकुर ने 8 months लिए, तो मतलब 8 महीने में अंकुर ने खत्म किया यूएससीएमए के दोनों पार्ट्स. अंकुर, ओवर टू यू. Actually, sir, it all started with like it was last year July monsoon. Like it was raining heavy, and around I would say 11:30 p.m. I was at like around 15 kilometers away from my house at that time, and it was raining hard, and I was delivering orders and food and all. तो फिर I realized कि like ऐसे life नहीं चल सकती, ऐसे होगा नहीं कुछ. I was doing my BCom. I was in third year, and then I decided that I will research. I researched like कौन से certifications है which I can do. Then I came across US CMA, and it had like everything which I needed. मतलब first तो मैंने US CMA का ये देखा, content देखा. So content में I had my interest, like especially that corporate finance. So I decided to go for US CMA, and then I decided to like I need a coaching, of course. So मैंने रिसर्च किया कोचिंग के लिए. लाइक आई थिंक कोचिंग के लिए मैंने इंटेंस रिसर्च किया. आई वुड से लाइक 3 days मैंने बहुत सारे कॉल्स किए, वेब पे देखा, एंड एट द एंड फाइनली I decided to go with Simandhar Education. Akanksha ma'am was there who hired like मतलब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था क्या क्या लाइक है. So and then वैसे and actually the first 6 months were tough, very tough. Like I stopped working then in Zomato, and I was studying up. I had my BCom and then this US CMA. Lots of ups and downs. Like I was planning to give the exam on 1st January, but due to financial condition, it got delayed, and many exam दिया end of Feb. And thankfully, like I got an internship to Infosys by Simandhar Education, and then like I had that financial backup there, and I cleared my part one in with only 2.5 months of preparation. I had like my SEM 6 in March. I started my part one preparation in mid April. My end of March मेरा बीकॉम का सेम 6 स्टार्ट हुआ, एंड इट वाज टिल 8 अप्रैल मेरा बीकॉम रैप अप हुआ, एंड मैंने वहां से स्टार्ट किया अपना यूएस सीएमए का पार्ट वन, एंड आई डिड इट.
Like without Simandhar, it was not possible, I would say. अंकुर, आपको पता नहीं है आप कितने बड़े इंस्पिरेशन हो, राइट? हियरिंग दिस स्टोरी, एंड आई एम सो प्राउड कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम टू हेल्प यू अराउंड विथ इंटर्नशिप एंड मेक यू स्टडी फॉर द यूएस सीएमए एग्जाम। एंड जो भी पैसे थे आपको जो इंटर्नशिप में मिले, आपने वो अपने पढ़ाई में ही डाले। इस एज में बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, बहुत सारे लोग रोडों पे घूमते हैं, गर्लफ्रेंड्स रखते हैं, अलग अलग हैबिट्स में जाते हैं। बट आप अंकुर ऐसे आए हो जो हैबिचुअली आपने पूरी तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। आई नो दैट यू आर अ बिट इमोशनल नाउ, एंड मुझे पता है कि आपने कितनी मेहनत की है। जब आई रिमेम्बर, जब हम लोग ने रिलायंस के सीएफओ को बुलाया था और यू वर देयर इन आवर मुंबई सेशन जब मैं आया था, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मेट यू अंकुर। और मैंने तभी रिलायंस के सीएफओ को बताया था, रजनीश सर को, कि ये बंदा बहुत ही अलग है, राइट? और आपने जो मेरे साथ कन्वर्सेशन किया था नीचे, तभी मैं समझ गया था कि आप दूसरा पार्ट भी बहुत इजीली पास कर लोगे। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत चीज़ें करना चाहते हैं बट करते नहीं हैं। बट अंकुर, आपने जो स्टोरी फर्स्ट लाइन बोला है, जो आप 11:30 बजे रात को पिज़्ज़ाज और सब डिलीवर कर रहे थे, और आप तब आपको क्लिक हुआ कि आपको एक प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए। एंड आई एम वेरी लकी कि ऐसे स्टूडेंट समंदर में है। और जिस तरीके का इनिशिएटिव, मुझे पता भी नहीं था कि इन्फोसिस का इंटर्नशिप ऐसे हेल्प कर सकेगा स्टूडेंट्स को। और ये वीडियो डेफिनेटली इज नॉट फॉर मार्केटिंग और टेलिंग दैट व्हाट वी हैव डन और समथिंग लाइक दैट अंकुर। बट ये वीडियो मैंने इसलिए इतना इंस्टेंटली किया क्योंकि आपके रिजल्ट आई थिंक 15 मिनट ही हुए सीएमए के Yes. रिजल्ट आते हुए, और मुझे था कि मैं सबको बताऊं कि मेहनत का क्या फल हो सकता है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। और आप एक जीता जागता एग्जाम्पल हो हार्ड वर्क का अंकुर। एंड आई एम Yes. so प्राउड in front of all the audience today because there are so many followers of Simandhar or following us for CPA, CMA, CIA। और बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, श्रीपाल सर आप सीएमए का क्यों इतना वीडियोस करते नहीं हो, क्यों सीएमए के बारे में ज्यादा बात करते नहीं हो। और मैं हमेशा से सोचता था कि मुझे एक ऐसा इंस्पिरेशन चाहिए जो सब सीएमए कम्युनिटी को जगा सके। एंड अंकुर, यू आर वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स टुडे। Thank you. नथिंग टू क्राई अराउंड अंकुर, आज आपका दिन है। एंड आई नो दैट it's very emotional for you, for your parents and everyone, passing both the parts। and Yes. और मुझे डेफिनेटली आई थिंक इन्फोसिस के सीएफओ को भी फोन करना पड़ेगा कि आपने जो अचीव किया है, नॉट एट ऑल अ स्मॉल थिंग, राइट? एक डिलीवरी Yes. बॉय से लेके एक प्रोफेशनल एजुकेशन कंप्लीट करना, itself is a very big achievement for an institute, for a company which you are working with, right Ankur? So thank you so Yes. much for being such an inspiration to everyone। अंकुर, एक मेरे को बात बताइए, आप इंटर्नशिप में भी थे, आप सीखने के दोनों पार्ट्स भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो आप कितना टाइम लगाते थे दिन में? क्योंकि सब लोगों को चाहिए कि यूएससीएम में कितने टाइम में हो सकता है। आपने 8 महीने में खत्म किया है दोनों पार्ट। सो आप दिन के कितने घंटे यू यूज टू स्पेंड ऑन योर स्टडीज एंड हाउ मच यू यूज टू स्पेंड ऑन इंटर्नशिप्स एट इन्फोसिस? आई थिंक इंटर्नशिप का ऐसा लाइक कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता, इट वाज बट यू कैन काउंट इज लाइक इट लाइक 8 hours internship, and then I used to study 4 hours daily, but I think I was consistent like daily. Consistency is more important than like मतलब एक दिन में, as श्रीपाल सर you only say like एक दिन में 12 घंटा पढ़ो, like next दिन नहीं पढ़ो, then it's no use. So I used to study almost, I would say, daily. Not even I have missed one day, like 4 hours, 3 hours daily. And in between my work, like 8 hours if I am working for my company, and मैंने अगर 2 hour का काम 1.5 hour में किया, तो that 30 minutes I would look that summary and flashcards like that. I think practice is very important for clearing the exam quickly, because the more you, like many people are like, जब मैंने वेबिनार किया था लाइक हाउ टू लाइक स्ट्रेटेजी एंड ऑल शेयर की, तो पीपल वर सेइंग दैट एवरेज से हो सकता है, अगर इफ समवन इज एवरेज कैन दे पास द एग्जाम। आई विल से लाइक एनीबडी कैन पास द एग्जाम, बट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस। मेरे को लगता है शायद अनुया जो अभी काउंसलिंग में भी है, और मेरे थोड़े काउंसलर्स भी, आई थिंक दे विल आल्सो गेट मोटिवेटेड कि यार हम भी पास कर सकते। बिकॉज अंकुर, आपने जो वो लाइन बोला है कि एनीवन कैन पास द एग्जाम, राइट? और बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स है, एक्सक्यूजेस अगर मैं देना स्टार्ट करूं तो शायद दिन भी खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं सीपीए के लिए पढ़ सकता हूं या नहीं, मैं बीकॉम का हूं, मैं बीटेक का बैकग्राउंड का हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं। आपको देखने के बाद आई थिंक बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाएंगे कि इफ अंकुर कैन डू इट,
इतना हार्डवर्क, और ये एज में जहाँ पे बीकॉम थर्ड ईयर में आप थे, जहाँ पे मेरे को पता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इंक्लूडिंग मी, जब मैं बीकॉम फाइनल ईयर में रहता था तो बहुत इधर उधर घूमते थे हम लोग, बंक करते थे कॉलेजेस एंड ऑल, और आपका एक एग्जाम्पल ऐसे आया है. सो आई थिंक दिस विल मोटिवेट आई मीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द कम्युनिटी टुडे. आज ये वीडियो के बाद आई थिंक मेनी ऑफ देम विल चेंज देयर परसेप्शन, चेंज देयर वे, चेंज देयर. और ऐसा नहीं मालूम मेरे को कि आज वो इंस्पायर्ड रहेंगे, कल शायद वापस वही काम करें, बट एटलीस्ट उनके मन में हमेशा रहेगा कि यार इतने किया है तो दिस इज समथिंग नॉट difficult to achieve, right? This is something Yes. we can also do. If Ankur can do it, then we definitely can do at least 2-3 hours in a day. आपकी वीडियो के वजह से या आपके इंटरेक्शन के वजह से मुझे एक बहाना मिल गया स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का कि यार आप भी पढ़ो 2 घंटे 3 घंटे. सिर्फ सिमंदर में एनरोल होके is not the answer, right? Just because Yes. talking to people, just getting CPA evaluation report, just enrolling with CPA or enrolling with CMA doesn't make your world successful. आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको हर दिन 3 से 4 घंटे पढ़ने पड़ेंगे. इट्स नॉट अबाउट द टीचर, इट्स अबाउट योर ओन कमिटमेंट, इट्स अबाउट योर ओन हार्ड वर्क व्हिच अंकुर हैव डन इट एंड एंश्योर दैट ही पास द एग्जाम. अंकुर, मेरे को पता है कि सीएमए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आर रियली टफ. अगर आप सीएमए का पास परसेंटेज देखो, इट्स वेरी वेरी टफ. और पास परसेंटेज आप देखोगे लाइक 10 to 11% आया था लास्ट ईयर, एंड यूएस सीएमए में बहुत सारे लोग उतने पास नहीं हो रहे. सीएमए पार्ट 1 जैसे एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, अकाउंटिंग है, एंड देन यू हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स विद दैट. इंटरनल कंट्रोल है, कॉस्ट मैनेजमेंट है. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट इतना इजी नहीं है. तो आपने क्या क्या टेक्निक्स और मेथड्स यूटिलाइज किए थे अपार्ट फ्रॉम विजिटिंग आवर लेक्चर्स? आपने क्या क्या किया था हर दिन जो आप 2 महीने या 1.5 महीने में सीएमए पार्ट 1 पास कर चुके? आई थिंक लाइक जो फर्स्ट तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए सीमांदर के वीडियोस आर इनफ टू गेट द कॉन्सेप्ट राइट. आई थिंक गेटिंग द कॉन्सेप्ट राइट इज द की थिंग टू पास द यूएस सीएमए. लाइक बहुत लोग होते हैं 350 340 पे अटक जाते हैं बिकॉज लाइक ये यूएस सीएमए में व्हेन वी गो फॉर द एग्जाम तो क्वेश्चंस लाइक हमारे इंडियन एग्जाम से मोस्टली टेक्स्ट बुक में से आते हैं, बट यूएस सीएमए में इट्स नॉट लाइक दैट. मतलब कॉन्सेप्ट के बेसिस पे दे विल आस्क एनीथिंग, सो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. तो फर्स्ट थिंग लाइक सीमांदर के वीडियोस देखे, जहां जहां मैंने डाउट था मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया. एंड उसके अलावा when we do MCQs तो many people do it like very quickly. So like जब मैं एक MCQ कर रहा हूँ, even if I am doing it right, so I used to read all the reasons like four options are there. तो जो रॉन्ग है वो क्यों रॉन्ग है, तो ये भी करने से एक होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहता है. सो मैंने वो प्रैक्टिस ज्यादा किया MCQ, इसलिए मेरे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर थे एंड मुझे एग्जाम इजी पड़ा. लाइक आई वुड से I mean you will also not believe, but I did my MCQs both for part 2 and part 1. I completed my MCQs in 2 hours out of 3. For MCQs we get 3 hours, I completed it in 2 hours. I mean outstanding अंकुर. आपको जो conceptual clarity है एक young age में, I mean I'm just listening to you in this entire video, right? जहाँ पे आप MCQs के बारे में बात कर रहे हो, आप just in BCom final year, because there are so many people here who are working professionals who have enrolled with Simandhar for US CMA and even in fact for CPA. एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार सॉफ्टवेयर है, मेरे को कंप्यूटर है, इंग्लिश है, समझ नहीं आता ये कैसे. तो अंकुर आपने वो कैसे, आप वो फियर्स आपने कैसे कॉन्कर किए? बिकॉज दिस इज अ कंप्यूटराइज्ड एग्जाम, ये पेपर पेंसिल एग्जाम नहीं है, आपको एक सेंटर में जाके एग्जाम देना पड़ता है एंड इंग्लिश लैंग्वेज में है, राइट? सो ये कैसे आपने टैकल किया अंकुर? Actually, exam का fear नहीं था because like Simandhar provides you that Becker software and the exam will be very similar to Becker. In fact, the layouts, colors, everything is similar to Becker. So exam में वो fear नहीं आता है because like आपने already Becker में इतना practice किया तो it seems like just another practice test. I think pressure दिमाग पे नहीं होना चाहिए. People do mistake that जब exam होता है तो high pressure होता है तो they प्रेशर के चलते लाइक वो कुछ क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं. तो आई थिंक बेकर एंड सीएमए का जो है लेआउट क्वाइट सिमिलर है, सो इसलिए मुझे फियर नहीं था एग्जाम का. आप मेरे को बताइए बिकॉज इंग्लिश इज समथिंग विच एवरीवन इज फ्राइटेंड ऑफ, राइट? सो हाउ डिड यू काइंड ऑफ मैनेज, बिकॉज लॉट ऑफ देम टेल दैट दिस इज अ इंग्लिश बेस्ड लिटरेचर, रीडिंग द क्वेश्चन एंड ऑल. So did you do any of the techniques to improve your understanding power, your reading skills? आप शायद if you would have read newspapers or something, कैसे आपने वो improve किया है?
एक्चुअली इंग्लिश इज लाइक मतलब ऐसा इंग्लिश नहीं होगा क्वेश्चंस, दे विल नॉट गिव यू सच क्वेश्चन दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। लाइक इंग्लिश का उतना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इफ अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने टेक्स्ट बुक रीड किया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी सम में। 100 में से एक सम आ सकता है जिसमें कोई वर्ड है यू डोंट नो, बट उसको भी इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, तो आप जैसे हम लोग कोई नॉवेल पढ़ते हैं उसमें कॉम्प्लिकेटेड होती है स्टोरीज, वी डोंट नो मीनिंग ऑफ वर्ड्स, तो हम उसको कॉन्टेक्स्ट लेके वो वर्ड का मतलब समझ जाते हैं, तो इट्स लाइक दैट। बहुत बढ़िया अंकुर, इट्स अमेजिंग व्हाट आर द पीपल वाचिंग यू एंड ऑब्जर्विंग, स्पेशली द स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं आज एंड मेनी ऑफ देम आर कमेंटिंग देयर, hats off and all, and I just don't want them to just comment but also apply what Ankur is doing. I think that is where I am coming from, and that's where the video is being done. Guys who all are watching us, please see how Ankur have put his hard work and got the qualification of US CMA, both the parts, and passing in just within a time span of 8 months, right? And really amazing, Ankur. And one very important point which touched me when you said me on phone also, कि सर मेरे पास पैसे नहीं थे कि दूसरा पार्ट लिख सकूं, एंड इन्फोसिस के इंटर्नशिप के जो पैसे आए थे आपने सीएमए के एग्जाम में लगा दिए। अंकुर, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो इंटर्नशिप से पैसे कमाते हैं एंड इधर उधर स्पेंड कर देते, मूवीज एंड ऑल, और आपने एग्जाम के लिए स्पेंड किया है, ऐसा क्यों? मतलब क्या एक जो मोटिवेशन है जो आपको ड्राइव करता है ये चीजों के लिए? व्हाट इज समथिंग व्हिच इज ड्राइविंग यू टुवर्ड्स दिस कोर्स? या एक्चुअली ये आपने पहले भी बोला एंड उसमें मैं क्वाइट इमोशनल हो गया था, बिकॉज इट्स लाइक मैं मतलब ये रीजन इसलिए कि मैंने अपने पापा से सीखा है, वुड से लाइक मतलब ही अर्न्स, मतलब वो लाइक एक सर्विस करते हैं एक अलाइनमेंट शॉप में वर्क करते हो, एंड उनकी सैलरी बहुत कम है, बट वॉट एवर द मनी इज, मतलब बचपन से लेके अभी तक उन्होंने जो मेजर पार्ट है अपने सैलरी का हमेशा हमारे एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है। तो ये मैंने उनसे सीखा है कि ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन योर एजुकेशन। तो ये आई वुड से इसका क्रेडिट मेरे डैड को जाता है। आउटस्टैंडिंग अंकुर, सो रियली हैप्पी एक्चुअली। जो मैं देख रहा हूँ, आई थिंक मैं हमेशा रियलिटी शोज या कहीं और देखता था, तो लिटिल सरप्राइजिंग, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, बिकॉज ये तो ऐसी स्टोरी बनी है कि आई मीन इट्स कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम योर पेरेंट्स। आपका हार्डवर्क, आपका आपने जो इंटर्नशिप के पैसे वो अपने कोर्स में डाले हैं, और एंड आई एम सो ग्लैड कि हम लोग ये इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। जैसे हम लोग ने ईवाई में बहुत सारे लोगों को प्लेस करवाया था। आई एम सो हैप्पी दैट व्हेन आई हियर, और सच में अंकुर, जब मेरे को मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के बहुत सारे लोगों को, जैसे सर मेरी फैमिली आज खुश है, मेरे पेरेंट्स खुश है, इंटर्नशिप मिल गई, मेरे को एक जॉब मिल गया, आई थिंक दैट्स वेयर शायद आई एम वेरी लकी कि भगवान ने हम लोग को थोड़े बहुत जो नेटवर्किंग दिया था उसको हम लोग ने यूटिलाइज करके स्टूडेंट्स के लिए यूज किया है। एक रहता है नेटवर्किंग रहना, लोगों को पहचाना, एक दूसरा रहता है कि वो नेटवर्किंग को यूज करके अपने स्टूडेंट्स के एडवांटेज के लिए लाना। सो दैट इज समथिंग हाँ, मैं और मेरी टीम आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन एंड टू गिव मोर अपॉर्चुनिटी। जैसे ऐसे बहुत सारे अंकुर जो इंडिया में हैं जो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक ये इनिशिएटिव्स की वजह से आई एम एबल टू आइडेंटिफाई देम, एंड आई एम सो हैप्पी। आई थिंक दिस इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट एट सिमंदर एजुकेशन, एंड आई कैन टेल यू अंकुर, मैंने बहुत सारी चीजें की है सिमंदर में, लाइक आई रिप्रेजेंटेड रिलायंस, आई वेंट टू माइक्रोसॉफ्ट, लीडर्स एडोबी है, एसओपी के सीएफओ से, बहुत सारे कंपनीज आईएम्स आईएसबीज में आया हूँ, बट कभी मेरे को इतनी खुशी नहीं मिली है जो आज मेरे को मिली। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, हम लोग को एलिजा भी मिला है सीपीए में जो कमनीत ने जीता था, बट आपका जो अचीवमेंट है विल ऑलवेज बी देयर विथ मी एज अ वेरी वेरी स्पेशल थिंग, बिकॉज आपने जो एक डेडिकेशन दिखाया है एक फैकल्टी के तरफ, एक इंस्टीट्यूट के तरफ, एक खुद के तरफ, एंड आपके पेरेंट्स को जो आपने आज प्राउड किया है अंकुर, we are so happy at Simandhar Education, right? And thank you so much. I will not take much of your time today. Enjoy with your parents. आज ही result आए हैं, so I will not disturb you much. Sir, I would like to say something that all the credit goes to my parents and Simandhar Education, whatever I have achieved. And I would say like जब मैंने Simandhar recently join किया था, तो I was very surprised. Like मैंने बस like I didn't know मतलब strategy कैसे बनाना है, like मतलब पता नहीं था कि प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से कैसे करना है। तो आवर सीमांदर एलुमिनाइज लाइक टीचर्स एंड आप तो बहुत सपोर्टिव हो, but even the Simandhar alumni, like I texted Satyam Jain sir only one text like I need some help. He called me 1 hour, he explained me everything, so I was quite surprised like
people are so helpful at Simandhar. Not only you टीचर्स बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स. ये कल्चर सर आपने बनाया, सो हेड्स ऑफ टू यू जो आपने कल्चर एंड ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, हु आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प ईच अदर. थैंक यू सो मच अंकुर. आई थिंक सत्यम से मैं जरूर बात करूंगा. सो ही वर्क्स एट नो क्राफ्ट एंड आई होप इन्फोसिस में आपका इंटर्नशिप विल बी कन्वर्टेड टू फुल टाइम. आई थिंक it will not take much of a time. I guess you still have 2 months of internship left over in Infosys and job तो बहुत बाएं हाथ का खेल है सिमंदर के लिए प्रोवाइड करना कोई भी CPA CMA स्टूडेंट्स के लिए. बट ये सब चीजें वापस नहीं आएंगी एंड आई विल चेरिश टुडे. आपके साथ मैं खुद भी एंजॉय करूंगा क्योंकि मैं खुद भी बहुत आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू बी ऑनेस्ट और बहुत ही ज्यादा इमोशनल मेरी तरफ से भी है. सो थैंक यू सो मच अंकुर and I'm really happy with all your achievements and in fact everyone at Simandhar. Anuya, do you want to add on something for Ankur because you're there in today's session as well? Yes, Ankur. Ankur, first of all, very hearty congratulations to you. We are so very proud of you. Thank you, ma'am. When I heard about your story, there was seriously goosebumps on me. So I'm really amazed with the way you have shown your interest and all. And I'm sure you're not going to stop with US CMA. You will definitely plan for US CPA as well, so that you'll have many opportunities in your hand. Yes, don't worry अंकुर, अनुया आपको दूसरा कुछ करने के लिए नहीं बोल रही है. Infosys स्पॉन्सर करता है US CPA के लिए, तो वो खुद पैसे देंगे CPA के लिए because we are tied up with Infosys. तो अगर आप आगे जाके CPA भी करें तो definitely you can do it without any cost. But nevertheless, I think CMA itself is a big thing and I'm so happy. And once again, thank you so much Ankur for coming in and thank you everyone for joining in at shorter time on YouTube. We'll stay connected, guys. Any questions on US CMA, US CPA, Ankur is there on LinkedIn. You can follow him on LinkedIn. He was there with us in the Reliance when the Reliance CFO came in Mumbai. Ankur, अब मैं मुंबई आऊँगा जब next महीने. Definitely, I will meet you with some surprises and gifts. Thank you so much, Ankur. Yes, sir. Sir, thank you, sir. Before we end up, I just wanted to ask because today also I've encountered this question. I mean, most of the students think that Becker is a very complicated subject for US CMA. So, what are your views about it, Ankur? Like Becker, I don't think so. Like it's complicated because like Becker is very helpful because when we study in college and classes, it is a structured education. Like we know in what direction we have to study. So Becker does that work for you. If you see in Becker, everything is very structured manner. You just have to follow the steps. Like first there will be video, there will be a textbook, there will be MCQs. Then below that there are flashcards. Then below that there are you can make your own MCQs for particular sections. So I think it's very helpful. Becker, you should just know how to use it, and it's very simple also. Okay. So that Ankur, you had Satyam support and our faculties there at Simandhar. So I think that could have made it more easier to understand. Yes, and I think people who are watching us and asking questions on that, whether Simandhar only provides Becker or something like that, definitely the answer is absolutely no, because we are not product resellers. There are 30,000 things which Simandhar does apart from just providing Becker. And I think Ankur might be already Ankur words might have answered a lot of the questions which have come from that perspective, right? Any further questions before Ankur goes off? Yes, Ankur. So how did you, when did you realize that you're ready for the exams, and when did you make a decision to go for the exam, Ankur? Can you just give a... I think for the day I realized that I'm ready for exam, what I do first, I complete Becker whole everything, and like if I have some conceptual doubt, like I will see Simandhar live lectures which are recorded, and I will clear my concepts. I will solve the MCQs. Then there is unlimited practice text. I solve 100 questions, and if I am getting out of 100, I am getting like 85, 90. Then I feel like I am very much ready for exam. Okay. Thank you so much. And how was the registration process and support provided by Simandhar? Did you face any challenges? No. Like you have any doubt, raise a ticket and Simandhar will help you regarding registration and also. No tension regarding that. Okay. So you only focused on preparation and rest Simandhar took care. Yes, everything. Yeah. Thank you so much, sir.
Thank you. Thank you, So Ankur. Ankur, आपके पूरे journey में Rahul was there from Simandhar, you had Akansha there, you had so many people supporting from Simandhar. Satyam tha, I mean Gokul one sir of our was there. Gokul was there. So thank you everyone who are watching us. So Gokul, thank you so much. Thank you Satyam. It's good that the alumni are helping each other, the students. That shows the respect you have towards me and Samandar. And really happy Gokul and Satyam, if you're watching us. Thank you so much. We definitely want to have a call post this video as well. So Ankur, before going, one final question. What are those three tips which you want to give for the students who are preparing for the US CMA exam for part 1 and part 2 separately? Three tips for part 1, three tips for part 2. I think like part one and part two, like the strategy is very similar for both of them, but it's like part one is bit lengthy. Three tips would be like, first thing is concept clarity is the first, second is consistency, and third is practice. Like practice that MCQs at the end, 100 questions are there. You should practice that. Like it's hard to sit like 4 hours for an exam. Like we are not habituated like that. So you should sit for 4 hours and do a full length test n number of times, like at least 2 to 3 times. So these three things I would say are very important. Concept clarity, practice them. First, get your concept right. Second, practice them, like formative learning people call that, like practicing the concept, like by doing sums we understand concepts better. So concept clarity by listening your Simandhar's lecture, then MCQ practice, and then third is sit for 4 hour test, like give full length mock test and that 100 question practice test. These three things are important. Thank you so much, Ankur. For people who are watching us for US CMA, the strategy is very simple. Practice, be consistent, and do not go for the exam till you don't score a 85 or 90 in the mock. That will decide whether you are prepared for the exam or not. So this is the very important thing, because a lot of them schedule the exam without knowing that what is their score in the mock test. So our product has a lot of mock tests in it. So practice those mock tests till you don't score a 85 or 90 in those mock tests. And 90%, I would say, don't go to the CMA exam and write the exam. I think that is what Ankur is trying to insist there. And please ensure that you watch each and every lecture of Simandhar. In case if you miss any of the classes, we do have recordings as well, so you can always go through the recorded lectures as well, right? And Also, I think, sir, I would like to one more point, that also there are tips on Simandhar portal. Student can find that there are tips for how to attempt MCQ and SS2. So they should go through that also. And in Simandhar portal there is also retired CMA questions. So that should be practiced too. yes, so we have those additional multiple choice questions on Samandhar portal, guys. So please do practice that as well. I think that's what Ankur is insisting. I hope that will also add more value to your preparations as well. Thank you so much everyone for watching in. Thank you Ankur. I hope Thank you, sir. ये वीडियो के बाद स्टूडेंट्स मेरे को बोले नहीं कि श्रीपाल सर सीएमए के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, बिकॉज एक अंकुर काफी है पूरे सीपीए सीएमए सीआईए ये का सबका क्लैरिफिकेशन देने के लिए, बिकॉज अंकुर योर स्टोरी now will inspire thousands of people who want to enroll for this particular course. Thank you so much, Ankur. It was Thank great you, sir. having you. Thank you, sir. Thanks a lot.